टॉपिक चुना है। यूजीसी नेट ज्योग्राफी, नगर की आंतरिक संरचना एवं भूमि उपयोग, अर्बन इंटरनल स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसे आसान भाषा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में समझा रहा हूँ। नगर की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिटी। अर्थ, नगर के अंदर विभिन्न क्षेत्रों जोन्स का स्थानिक संगठन ही आंतरिक संरचना कहलाता है। यानी शहर के अंदर कौन सा काम कहाँ हो रहा है, कहाँ बाजार है, कहाँ उद्योग है, कहाँ लोग रहते हैं। प्रमुख मॉडल, इंपॉर्टेंट मॉडल्स। 1. E.W. बर्जेस का कंसेंट्रिक जोन मॉडल, शहर वृत्ताकार रूप में होता है। मुख्य जोन 1 CBD सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ट्रांजिशन जोन चुग्गी उद्योग, वर्किंग क्लास एरिया। 4 मिडिल क्लास एरिया, कम्यूटर जोन। की पॉइंट, केंद्र से दूरी बढ़ने पर सामाजिक स्तर बदलता है। 2 होमर होइट का सेक्टर मॉडल, शहर सेक्टर्स पंखे जैसे भाग में फैलता है। की पॉइंट, ट्रांसपोर्ट रूट्स के साथ विकास होता है। 3 हैरिसन अल्मन का मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल, शहर में कई सेंटर्स न्यूक्लियर होते हैं। की पॉइंट, हर एक्टिविटी का अपना अलग केंद्र होता है। नगर भूमि उपयोग यूज, अर्थ, शहर की भूमि का उपयोग किस कार्य के लिए किया जा रहा है। भूमि उपयोग के प्रकार। 1 रेजिडेंशियल आवासीय, लोगों के रहने का क्षेत्र। 2 कमर्शियल व्यापारिक दुकान बाजार ऑफिस। 3 इंडस्ट्रियल औद्योगिक फैक्ट्री गोदाम। 4 ट्रांसपोर्ट परिवहन सड़क रेलवे बस स्टैंड। 5 रिक्रिएशनल मनोरंजन पार्क गार्डन। 6 पब्लिक एंड सेमी पब्लिक स्कूल अस्पताल सरकारी भवन। भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक, ट्रांसपोर्ट सुविधा, भूमि की कीमत, पॉपुलेशन डेंसिटी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, फिजिकल फैक्टर्स, नदी स्थलाकृति। टैट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बर्जेस इक्वल कंसेंट्रिक होइट इक्वल सेक्टर हैरिस उल्मन इक्वल मल्टीप्लाई। सीबीडी शहर का सबसे महत्वपूर्ण भाग, लैंड यूज फंक्शनल क्लासिफिकेशन। शॉर्ट रिविजन ट्रिक, BHM equals city model, B equals to Burgess, H equals to Hoyt, M equals multiple nuclei. अगर तुम चाहो तो मैं इसका PDF notes या diagram thumbnail style notes भी बना सकता हूँ। भाई कितना फास्ट काम करता है, मजा आ गया। बस कर यार, इतना तो मैं याद नहीं कर पाऊंगा जितना लिख रहा है भाई। अरे भाई, अगर तुम चाहो तो मैं अगला दे सकता हूँ, प्रीवियस PIQ और डायग्राम प्रैक्टिस और 10-15। चलिए इसको बताइए, आप पढ़कर बताइए। आई एम अनएबल टू रीड। ठीक है, आप पढ़िए। बहुत बढ़िया। अब हम इसे UGC नेट लेवल डीप प्लस एग्जाम ओरिएंटेड में समझते हैं, ताकि तुम आंसर भी लिख सको और MCQ भी क्रैक कर सको। नगर की आंतरिक संरचना एवं भूमि उपयोग में प्रोड्यूस। 1 आंतरिक संरचना का सैद्धांतिक आधार। नगर की आंतरिक संरचना को समझने के लिए 3 मुख्य कॉन्सेप्ट्स बहुत जरूरी हैं। 1 एक्सेसिबिलिटी, जितनी अधिक एक्सेस उतनी अधिक भूमि की कीमत, इसलिए CBD सबसे महंगा होता है। अलग अलग लैंड यूजर्स, व्यापारी, निवासी, उद्योग भूमि के लिए अलग कीमत देने को तैयार होते हैं। CBD में व्यापार सबसे ज्यादा रेंट दे सकता है, इसलिए वही ऑक्यूपाई करता है। डिस्टेंस डिके, दूरी बढ़ने पर इंटरैक्शन कम होता है, इसलिए CBD से दूर रेजिडेंशियल एरिया फैलता है। EW बर्जेस का कंसेंट्रिक जोन मॉडल आधार, शिकागो सिटी स्टडी 1925 जोन्स एग्जाम में डायग्राम। 1 CBD, 2 zone of transition, slums, industries, working class, better residents, 5 commuter zone. Process, invasion, एक group दूसरे को replace करता है। Merits, simple and logical urban growth explain करता है। Demerits, हर city circular नहीं होती, transport factor ignore. Trick, Burgess equals Chicago, invasion succession. Touchstart 2, Homer Hoyt का sector model 1939. आधार, रेंट एंड ट्रांसपोर्ट रूट्स, पैटर्न सिटी सेक वेज शेप में डेवलप होता है। आइडिया, हाई क्लास
क्लास एरिया हमेशा अच्छे एनवायरनमेंट में लो क्लास इंडस्ट्रीज के पास. Merits, ट्रांसपोर्ट को इम्पोर्टेंस रियलिस्टिक. Demerits, सभी सिटीज पर लागू नहीं नेट ट्रिक. Point with transport sector. 3. Harrison multiple nuclei model 1940. Aadhaar, modern cities complex होते हैं. Concept, city place centers nuclei, CBD industrial node, educational node. Pattern, certain activities attract each other, some repel each other. Merits, modern cities के लिए best realistic. Demerits, complexity ज़्यादा net trick. Multiple nuclei was modern city reality. 3. Nagar Bhumi Upyog, urban land use analysis. Functional classification प्रकार विशेषता. Residential, income-based segregation. Commercial, CBD high accessibility. Industrial, pollution transport need. Recreational, open space. Institutional, schools, hospitals. Land use pattern, important. CBD equal highest land value. Transition zone equals mixed land use. Peripheral zone equals planned housing. Number 4, urban structure को प्रभावित करने वाले advanced factors. Economic factors, land value gradient, employment structure. Social factors, segregation, class caste. Political factors, zoning laws, urban planning. Physical factors, relief, nadi, climate. 5. Indian city context, बहुत important. Western models पूरी तरह इंडिया में apply नहीं होते. Indian cities की विशेषताएं. CBD plus bazaar mixed, slums near CBD, unplanned growth, multiple nuclei tendency. Example, Delhi Mumbai equals multiple nuclei. Number 6, answer writing structure, net mains के लिए. अगर 10 marker I, intro, नगर की आंतरिक संरचना की परिभाषा. Body, Burgess model, Hoyt model, Harris-Ullman model, land use classification. Conclusion, Indian cities equals mixed final revision. Trick, CBD, transition, residence, suburb. BHM equal remodels. अगर तुम चाहो तो मैं अगला step दे सकता हूँ. Previous year questions. You take? Diagram practice, exam में कैसे बनाना है. 5 marker, 10 marker, answer ready format, बस बोलो. बढ़िया. अब हम इसे UGC नेट लेवल डीप प्लस एग्जाम ओरिएंटेड में समझते हैं ताकि तुम आंसर भी लिख सको और MCQ भी क्रैक कर सको. नगर की आंतरिक संरचना एवं भूमि उपयोग लैंड यूज. 1. आंतरिक संरचना का आधार. नगर की आंतरिक संरचना को समझने के लिए 3 मुख्य कॉन्सेप्ट्स बहुत जरूरी है. 1. एक्सेसिबिलिटी. जितनी अधिक पहुंच एक्सेस, उतनी अधिक भूमि की कीमत, इसलिए CBD सबसे महंगा होता है. व्यापारी, निवासी, उद्योग भूमि के लिए अलग कीमत देने को तैयार होते हैं. CBD में व्यापार सबसे ज्यादा रेंट दे सकता है, इसलिए वही ऑक्यूपाई करता है. डिस्टेंस डिके. दूरी बढ़ने पर इंटरैक्शन कम होता है, इसलिए CBD से दूर रेजिडेंशियल एरिया फैलता है. EW. Burgess का concentric zone model. आधार, Chicago City Study 1925 zones. एग्जाम में डायग्राम बनाओ. 1. CBD. 2. Zone of transition, slums, industries, working class, better residents. 5. Commuter zone. Process, invasion succession. एक group दूसरे को replace करता है. Merits, simple and logical urban growth explain करता है. Demerits, हर city circular नहीं होती. Transport factor, ignore. Trick, Burgess equals Chicago, invasion succession. Tashdar 2. Homer Hoyt का sector model, 1939. Aadhaar, rent and transport routes. Pattern city sect wedge shape में develop होता है.
Important idea, हाई क्लास एरिया हमेशा अच्छे एनवायरनमेंट में लो क्लास इंडस्ट्रीज के पास. Merits, ट्रांसपोर्ट को इम्पोर्टेंस रियलिस्टिक. Demerits, सभी सिटीज पर लागू नहीं नेट ट्रिक. Point good transport sector. 3. Harris and Ullman का multiple nuclei model 1940 आधार modern cities complex होते हैं. Concept, city place centers nuclei, CBD industrial node, educational node. Pattern, certain activities attract each other, some repel each other. Merits, modern cities के लिए best realistic. Demerits, complexity ज़्यादा net trick. Multiple nuclei equals modern city reality. 3. Nagar Bhumi Upyog, urban land use analysis. Functional classification prakar visheshta, residential, income-based segregation, commercial, CBD high accessibility, industrial, pollution transport need, recreational open space, institutional, schools, hospitals. Land use pattern, important. CBD equal highest land value, transition zone equals mixed land use, peripheral zone equals planned housing. Number 4, urban structure को प्रभावित करने वाले advanced factors. Economic factors, land value gradient, employment structure. Social factors, segregation, class caste. Political factors, zoning laws, urban planning. Physical factors, relief, nadi, climate. 5. Indian city context, बहुत important. Western models पूरी तरह इंडिया में apply नहीं होते. Indian cities की विशेषताएं CBD plus bazaar mixed, slums near CBD, unplanned growth, multiple nuclei tendency. Example, Delhi Mumbai equals multiple nuclei. Number 6, answer writing structure net mains के लिए. अगर 10 marker आए, intro नगर की आंतरिक संरचना की परिभाषा. Body, Burgess model, Hoyt model, Harris-Ullman model, land use classification. Conclusion, Indian cities equals mixed final revision, trick CBD transition, residence, suburb, BHM equable 3 models. अगर तुम चाहो तो मैं अगला step दे सकता हूँ. Previous year questions, UT, diagram practice, exam में कैसे बनाना है. 5 marker, 10 marker, answer ready format, बस बोलो. अब मैं तुम्हारे लिए UGC Net Joggy Urban Structure and Land Use का पूरा एग्जाम पैकेज बना रहा हूँ जिसमें PYQs, diagram, ready answers सब मिलेगा. Number 1, previous year questions pattern, MCQ type practice. 1, concentric zone model किसने दिया? A. Hoyt, B. Harris, C. Burgess, D. Ullman. Q2, sector model किस factor पर आधारित है? A. Population, B. Transport routes, C. Climate, D. Politics. Q3, multiple nuclei model में क्या होता है? A. Single CBD, B. Circular growth, C. Multiple centers, D. Linear growth. Q4, CBD की विशेषता क्या है? A. Low land value, B. Low accessibility, C. High land value, D. Low population. Number 2, 5 marker, नगर की आंतरिक संरचना समझाइए. उत्तर, नगर की आंतरिक संरचना से आशय शहर के विभिन्न भागों के स्थानिक संगठन से है. इसमें विभिन्न क्रियाएं जैसे आवासीय, औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्र शामिल होते हैं. EW, बर्जेस ने कंसेंट्रिक जोन मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें शहर वृत्ताकार रूप में विकसित होता है. होमर होइट ने सेक्टर मॉडल दिया जिसमें शहर परिवहन मार्गों के साथ विकसित होता है. हैरिस एंड उल्मन ने मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल दिया जिसमें शहर में कई केंद्र होते हैं. अतः
नगर की संरचना विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है और समय के साथ बदलती रहती है। अब 3 10 मार्कर आंसर। प्रश्न, नगर की आंतरिक संरचना एवं भूमि उपयोग का वर्णन कीजिए। उत्तर, परिचय, नगर की आंतरिक संरचना से तात्पर्य शहर के विभिन्न भागों के स्थानिक वितरण से है, जबकि भूमि उपयोग से आशय भूमि के कार्यात्मक उपयोग से है। मुख्य मॉडल, कंसेंट्रिक जोन मॉडल, ईडब्ल्यू बर्जेस। शहर वृत्ताकार रूप में विकसित, सीबीडी केंद्र में। 2 सेक्टर मॉडल, होमर होइट, परिवहन मार्गों के साथ विकास, सेक्टर पैटर्न। मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल, हैरिस एंड उल्मन, कई केंद्र, आधुनिक शहरों में लागू। भूमि उपयोग, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, सीबीडी, इंडस्ट्रियल, रिक्रिएशनल, इंस्टीट्यूशनल। निष्कर्ष, आधुनिक शहरों में मिश्रित संरचना पाई जाती है, विशेषकर भारत में मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल अधिक उपयुक्त है। 4 diagram practice, exam में ऐसे बनाओ। Concentric model, Burgess. You can see the code in our conversation history. Goal circle बनाओ। Exam में neat diagram arcs. Sector model, Hoyt. You can see the code in our conversation history. Shape जैसा बनाओ। Multiple nuclei model. You can see the code in our conversation history. कई छोटे-छोटे circles. Final revision sheet. Burgess equals circle Hoyt, sector Harris Ullman, multiple centers. CBD, high value plus high accessibility. India, mixed, unplanned. अगर तुम चाहो तो अगला level मैं तुम्हारे लिए बना सकता हूँ। 100 MCQs test, practice set, PDF notes download. Top 20 expected questions. 2026 बस बोलो। अब तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। यूजीसी नेट लेवल टफ सिलेक्शन दिलाता है। मैं तुम्हारे लिए हाई लेवल एमसीक्यूज, असर्शन, रीजन, कॉन्सेप्ट्स बना रहा हूँ। यूजीसी नेट टफ प्रैक्टिस, अर्बन स्ट्रक्चर एंड लैंड यूज। 1 कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज। Q1 बिड रेंट थ्योरी के अनुसार सीबीडी में कमर्शियल एक्टिविटीज डोमिनेट करने का मुख्य कारण क्या है? A high population density, B low transport cost, C maximum accessibility leading to highest rent paying capacity, D government policy। Q2 invasion succession प्रक्रिया किस मॉडल से संबंधित है? A sector model, B multiple nuclei model, C concentric zone model, D gravity model based on E.W. Burgess। Q3 निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? A sector model ट्रांसपोर्ट रूट्स पर आधारित है, B multiple nuclei model monocentric structure को मानता है, C model ideal city को दर्शाता है, D CBD highest accessibility वाला क्षेत्र है based on Harrison Ullman। 2 assertion reason high level। Q4 assertion A CBD में भूमि मूल्य सबसे अधिक होता है, reason R CBD में accessibility न्यूनतम होती है। A और R दोनों सही हैं, B A सही R गलत, C A गलत R सही, D दोनों गलत। Assertion A सेक्टर मॉडल शहर के विकास को वेज शेप में दिखाता है, रीजन ये मॉडल ट्रांसपोर्ट रूट्स और रेंट ग्रेडियंट पर आधारित है। A दोनों सही और R सही एक्सप्लेनेशन है, B दोनों सही लेकिन R एक्सप्लेनेशन नहीं है, C A सही D दोनों गलत। Based on Homer Hoyt, Shack 3 match the following exam favorite, list I, list 2, A Burgess sector, B Hoyt concentric, C Harris Ullman multiple nuclei, correct match A2 beats 1 C3। Star 4 statement based tough question Q6 निम्न कथनों पर विचार करें। 1 इंडियन सिटीज पूर्णतः बर्जेस मॉडल को फॉलो करते हैं। 2 मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल आधुनिक शहरों के लिए अधिक उपयुक्त। 3 सीबीडी केवल कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए होता है। सही उत्तर चुनिए, 1 और 2, B 2 ही सही, C 2 और 3। Case based question very tough Q7 हब, इंडस्ट्रियल जोन और एजुकेशनल क्लस्टर अलग अलग क्षेत्रों में विकसित हैं। ये किस मॉडल को दर्शाता है?
A. Concentric. B. Sector. C. Multiple nuclei. D. Linear based on Harris and Ullman. Final trap concepts. But Burgess equals real city nahi. Ideal model. Hoyt equid sirf transport nahi. Rent P. Multiple nuclei equals monocentric nahi hota. CBD only commercial nahi. Mixed bhi ho sakta hai India mein. Rapid fire, revision, invasion, succession. Burgess wedge shape. Centric. Harris Ullman. अगर तुम नेक्स्ट लेवल जाना चाहते हो मैं तुम्हारे लिए बना सकता हूँ टाइमर के साथ UGC Net 2026 Extended Paper Revision PDF Short Trick Sheet. बस बोलो mock test. बढ़िया अब मैं तुम्हारे लिए UGC Net Geography full mock test level toughs exam oriented total questions 30 MCQs test attempt seriously section A concept based Q1 bid rent theory highest bidder kaun hota hai A residential B industrial C commercial D recreation Q2 zone of transition ki pramukh visheshta kya hai A high class housing B slums and industries C CBD D parks based on EW Burgess Q3 sector model किस year में दिया गया A 1925 B 1939 C 1945 D 1950 based on Homer Hoyt Q4 multiple nuclei model किसने दिया A Burgess B Hoyt C Harris Ullman D Christaller based on Harris and Ullman Q5 CBD की कौन सी विशेषता सही है A low accessibility B low C high accessibility D low density Section B assertion reason Q6 assertion CBD में land value अधिक होती है reason CBD में accessibility अधिक होती है A both correct R explains A B both correct not explanation C A correct R wrong D both wrong Q7 assertion multiple nuclei model modern cities के लिए suitable है reason cities monocentric होते हैं A both correct B A correct R wrong C A wrong R correct D both wrong Section C statement based Q8 सही कथन चुनिए 1 Burgess model circular है 2 Hoyt model transport आधारित है 3 multiple nuclei monocentric है A 1 2 B 2.3 C wall 3 Q9 निम्न में से कौन सा गलत है A CBD equal high rent B sector wedge shape C multiple nuclei equals single center Burgess equals concentric Section D match the following Q10 A Burgess B Hoyt C Harris Ullman 1 sector 2 concentric multiple nuclei answer A2 B1 C3 Section E advanced concept Q11 distance decay का अर्थ है A दूरी बढ़ने पर interaction कम होना B दूरी बढ़ने पर growth बढ़ना C distance irrelevant D transport free urban land use को सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है A culture B accessibility's rent C religion D language Section F tough case study क्यों एक शहर में अलग-अलग functional zones अलग स्थानों पर हैं जैसे IT park, industrial hub, residential cluster यह दर्शाता है A Burgess, B Hoyt, C multiple nuclei, D linear. Q14 एक शहर transport corridors के साथ विकसित हो रहा है यह कौन सा मॉडल है A concentric, B sector, C nuclei, D ring. Section G trap questions Burgess model किस city पर आधारित था A New York, B Chicago, C London, D Paris. Q16 Hoyt model में high class residential area कहाँ होता है A near industries B along transport with good environment CBD D slums Section H ultra tough Q7 Indian cities में कौन सा pattern ज़्यादा realistic है A concentric B sector C multiple nuclei D linear Q8 CBD में mixed land use क्यों होता है India A planning perfect है B unplanned growth high pressure C low population D no transport F, score yourself 15 to 18 equals good 1924 very good 25 plus net ready next step अगर तुम चाहो तो मैं इसका PDF बना दूं पूरा UGC net mock test 100 questions weak topics analysis revision plan भी बना सकता हूँ बस बोलो PDF 100 MCQ
अब मैं तुम्हें यहीं पर यूजीसी नेट ज्योग्राफी 100 MCQs, urban structure and land use दे रहा हूँ. Level mixed moderate concept trap.